Hello students. Hello students. This is a very interesting chapter. Interesting poem composed by Ron Mandrick about a student, a child who is sitting in the classroom. The teacher is teaching a very important topic, but the student is busy to imagine about new food for himself. He smells new food for thought when he get a smell from school's canteen. After that, he is extremely upset to imagine about it, that how he will get this delicious food, from spicy chana to puri, tasty peas, hot potato with lemon, pani puri, dosa, sambar, round vada, steaming momos, pav bhaji, samosas, pakode, chole bhature are dancing in his head every time. And he only imagines it to close his eyes. There is an attractive smile that has covered his face. Meanwhile, the teacher noticed his smile and came before him, asking that, "Repeat what I have taught." The child smiled at her sweetly, saying that he has only food for thought. Students, this is the summary of this poem. Now you see its line by line explanation. What do you think of when you sit at your school desk, especially when you are hungry? In this poem, the girl is distracted by aromas and thought of delicious dishes. Here the poet says that when you are in school and you are sitting, at that time you are also hungry. What you will think when you have some smell and thought of delicious dishes like that? Here these things has been described. Now you see, while sitting at my school desk, I really must confess, I am very hungry and looking and longing for recess. Here poet says that, indicated to the student, that अपने क्लास में डेस्क पर बैठे हुए मैं अब बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे अब कन्फेस हो गया था, अब मैं एक्सेप्ट कर लिया था कि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं अब रिसेस का वेट कर रहा था, अर्थात मुझे अब रिसेस की ज़रूरत थी। आई एम ट्रूली क्वाइट डिस्ट्रैक्टेड, मैं बिल्कुल अब डिस्ट्रैक्टेड हो चुका था। कांट हियर व्हाट टीचर सेड, टीचर जो भी पढ़ा रहे थे मैं उन चीज़ों को नहीं सुन सकता था। एज विजन्स ऑफ भेलपुरी स्टार्ट डांसिंग इन माई हेड, क्योंकि भेलपुरी का जो रूप था, जो उसका इमेजिनेशन था, वो मेरे हेड में बिल्कुल डांस कर रहा था, घूम रहा था। मीन्स एट दैट टाइम द चाइल्ड्स इमेजिनेशन was to eat भेलपुरी. An aroma from the canteen floats within my school. An aroma means the smell from the school's canteens floats within his school canteen when he found this, when he smelled this nice collection of dishes of spicy pungent chana, जो कि स्पाइसी इसमें चना बना था, कट में स्मेल आ रहा था। नाउ आई नियरली स्टार्ट टू ड्रूल, अब मेरा अब लार टपकने वाला था, बच्चे का अब लार टपकने वाला था। आई कैन ऑलमोस्ट टेस्ट द पूड़ी सर्व्ड विद टेस्टी पी, और कह रहा है कि अब मुझे पूड़ी का टेस्ट और टेस्टी पी को अब मुझे टेस्ट करना ही चाहिए, मैं उसको कर सकता, ऐसा वो सोचने लगा।
with piping hot potato and a little lemon squeeze. And he also think about the hot potato, spicy hot potato with the lemon squeezing, that will make it very spicy. Now his mind is concentrated, fully concentrated towards this dish, towards this spicy dishes. While teacher reads to us to wise old Madame Curie, here the students is busy to think about these spicy dishes, and there the teacher was busy to teach about wise old Madame Curie, who is the very Madame Curie, who was a great scientist. I fantasize about the joy of Pani Puri, but there was no effect of teacher's words over the student. He is busy to imagine about the joy of Pani Puri. He says that my mouth begins to water, my nose is tantalized, and the child says that at that time his mouth fills with water, and his nose is also tempted at that time by the crispy globes of goodness, delicately spiced. उस तरह के सारे crispy, spiced, delicated उन सारे डिशेस को सोच कर अब उसका मुंह बिल्कुल पानी से भर गया था, नोज भी उसका टेम्पटेड कर रहा था. Now he can't wait for a moment without eating those dishes. So he is extremely upset and busy in his heavy imagination. Now my best friend has her tiffin all nicely wrapped in foil. Then he saw to the tiffin of his best friend. He noticed that his tiffin has been wrapped in foil paper very nicely. Dosas with some sambar and round vadas fried in oil. Then he once again started to imagine about the tiffin, that definitely there will be dosas and sambar and round vada in frying in oil will also there. Then from the distance on a breezy, gentle, nearing close, scents of steaming momos waft merrily into my nose. अभी this time स्टूडेंट्स उस डोसा सांभर और वड़ा के बारे में ही बिजी था. तब तक हवा आई और जैसे ही हवा के साथ उसे मोमोज का सेंट उसके तरफ आए, मोमोज की महक उसकी तरफ आई. जैसे उसके नोज में मोमोज की महक आई और काफ़ी खुशी से झूम उठा. वाफ्ट मेरे इनटू माय नोज, जैसे उसके नोज में आई खुशी से वो झूम उठा. माई सेंसेस स्टार्ट रीलिंग, आई एम डिजी विद डिलाइट. एंड एट दैट टाइम this child's senses was out of control. He was dizzy with delight. प्रसन्नता से बिल्कुल वो पागल हो रहा था, घूम रहा था. At the thought of my pav bhaji waiting for a bite, and now he has a great thought of pav bhaji, and he is just about to bite it. I dream of savory samosas glistening with ghee. Meanwhile, he also thought about the beautiful, delicious samosas which was fried in ghee, looking very glistening, and spicy hot pakode with tamarind chutney. There were also spicy hot pakode with the tamarind chutney. In his mind, everything was running very rapidly in his mind. He wanted them as his lunch. Now the last stanza. I closed my eyes and dream of dishes piled upon my place. Finally the child
क्लोज्ड हिज आई, जैसे अपने आँख को बंद किया और बिल्कुल ड्रीम करने लगा। उसको अपने आँख के सामने प्लेट दिखाई दिया, इसमें बहुत से ये सारे डिश उसके सामने प्लेट में पड़ा हुआ है। एज यू कैन सी हियर इन द फिगर, he realized to this plate that was before him, puffed up chole bhature. It is so hard to concentrate. And then he also noticed to a very delicious things, chole bhature, and now it was very difficult for him to concentrate there, because he can't concentrate at that time. He only want to eat it. देन टीचर स्माइल्स राइट एट मी, और फिर टीचर का अचानक जब उस बच्चे के ऊपर नज़र पड़ती है, टीचर स्माइल करते उसके तरफ आते हैं और पूछते हैं, रिपीट व्हाट आई हैव टॉट, चलो बताओ मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, बताओ मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है। आई स्माइल एट हर स्वीटली नाउ दैट आई फूड फॉर थॉट। और फिर जो बच्चा है वो बच्चा भी काफ़ी स्वीटली उनकी तरफ स्माइल किया और कहता है, आई हैव फूड फॉर थॉट, मेरे पास तो बस फूड फॉर थॉट है, और बाकी चीज़ आपने पढ़ाया वो मैं कहाँ से बताऊँ। तो ही फाइनली सेड दैट आई हैव ओनली फूड फॉर थॉट, नथिंग मोर अबाउट योर एक्सप्लेनेशन, नथिंग मोर अबाउट योर एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से एक बच्चे की इमेजिनेशन, जिसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे अच्छे डिशेस के बारे में सोचता रहा और पूरे क्लास के उस टाइमिंग को स्पेंड कर लिया। फाइनली इट कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स।